तमनार प्रकल्प चालीक लागल्या उपरांत फुडली 15-20 वर्सां गोंयांत लायटीचो प्रॉब्लेम आसचो ना. तमनारचो साधन सुविधा वेवसाय स्टरलायट पॉवर सीईओ अरुण शर्मा उलयलो. गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेडा वतीन कला अकादमीत दिव्यांग भुरग्यां खातीर दवरिल्ल्या तुम भी चलो हम भी चले कार्यावळीत शर्मा उलयलो. फुडले पिळगे खातीर बऱ्या कार्यावळीक तमनाराचो खंय सदांच तेंको. गोवा तनवार जो प्रोजेक्ट है, this is bringing green energy to the state of Goa. It is connecting Goa to the renewable energy hubs of Karnataka, and therefore we have a clear opportunity to make Goa a run on 100% green energy in next 15 to 18 months time if we finish this project over that duration. Goa needs the 600-700 megawatts of electricity. This infrastructure will feed at least 1200 megawatts of electricity, which means the problem of Goa for next 15 to 20 years is taken care once we complete this project. We have a clear opportunity for the energy transition, and the work which Goa Tanmar team is doing is accelerating this transition. And I believe that there is no transition without a successful transmission. रिन्यूएबल पैदा करना आसान है, पर उसको ट्रांसपोर्ट करके घर घर तक लेके जाना मुश्किल है, और हम वो मुश्किल काम करने को एकदम तैयार हैं। एनर्जी ट्रांजिशन का हम बात करते हैं, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और आत्मनिर्भर भारत। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और आत्मनिर्भर भारत दोनों कनेक्टेड हैं।